Question number 6. This is May June 2021, paper 5, variant 3. Uska question number 6. Let's have a look at this first. Okay. Now it says how many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement. Now it's very straightforward. It's a standard question. There are 11 letters in total. Unka 11 factorial ho jayega. But then you have to look at the repetitions. You've got R, and yeah, so we've got 2 R's there. So that's going to be 2 factorial. Then we've got E's, E, and then another E, and then another E. We've got 3 E's. So we have 3 factorial because of that. And then Q is only coming once, U is only coming once, I, M, and T. Yeah, so the other letters are not repeated. You just evaluate this 11 factorial over 2 factorial and 3 factorial. We can't leave it like this. Agar is tarah chhod denge sirf 1 mark milega, answer likhne ka yahan pe mark hote hain. 11 factorial divided by 2 factorial and 3 factorial. That's going to give me 3, 3, 2, 6, 4, 0, 0. That's our final result. Okay, that's 3.3 million something. Yeah, हमारे पास आ गया. ठीक है, 3326400. Okay, part B. How many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement in which the 2 R's are together and the 3 E's are together? Okay, so we want the 2 R's together and the 3 E's together. So जो numbers repeat हो रहे हैं, we want those दो letters repeat हो रहे हैं, उन letters को हमें इकट्ठे रखना. ठीक है, let's do that. We want the 2 R's together. So we make 1 box for that. ये आपके पास 2 R's आ गए. So we have 2 R's together. The 3 E's also need to be together. So we have 1 box for that. 1 box for the E's. Now, how many letters are we left with? We're left with 6 letters, right? So on 6 letters, can we like boxes bana denge? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now we look at how many outer boxes do we have? We've got 8 boxes, 8 outer boxes. अब इनमें कोई repetition हो रही है? Repetition तो सिर्फ इन्हीं letters में थी, उनको तो आपने इकट्ठे कर दिया already. बाकी letters तो सारे different हैं. बाकी letters कौन से हमारे पास रह गए हैं? We've got Q, U, I, M, N, and T. All the other letters are different. तो उनमें कोई repetition नहीं है, तो ये सारे boxes different है. हमें किसी से divide नहीं करना. And then we look at the arrangements of these letters that are inside. E's ki arrangement, they're identical. We don't have to arrange them. R's are identical. Again, we don't have to arrange them. अगर आप करते भी तो R की क्या होती? It would have been 2 factorial over 2 factorial. E's की क्या हो जाती? 3 factorial over 3 factorial. And you're left with 8 factorial. ठीक है, वही आपके पास रह गया. And now you can evaluate this. 8 factorial को evaluate कर लें. या देख लें क्या आता है. This turns out to be 40320. Okay, that's what we get from part B here. Okay, let's move on. Now it says how many different arrangements are there of the 11 letters in the word requirement in which there are exactly 3 letters between the 2 R's. So we want exactly 3 letters between the 2 R's. Now, how do we think about this? So one way to think about this is we say, since we want 3 letters between the 2 R's, we can club these 5 letters together. Inka ek single box bana dete hain. And that box may look something like this. We've got an R here, and we've got an R here. I'll say this is R, and this is R, but this is one single box. I'm representing this dotted. And there are 3 letters in between these 2 R's. इनके दरम्यान में exactly 3 letters आएंगे. अब ये box इकट्ठा move करेगा, right? ये box इकट्ठा move करेगा. Okay. Now, how many other spaces do we have? We've got 1, 5 हमने यहाँ पे represent कर ली. कितने बाकी रह गए? 6 letters रह गए. So we can have 6 other boxes. I'm going to draw them here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now we think about how we can arrange all of this. Sorry about that. Okay. Ab outer boxes हमारे पास कितने? Let's count them. There are 6 these and then 1 that's big box. There are 7 outer boxes that we've got there. Okay?
7 आउटर बॉक्सेस, उनकी अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी? 7 फैक्टोरियल। लेकिन are there any boxes here that are identical? R's तो ठीक है यहाँ पर आ गए हैं, R's तो ठीक है यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन बाकी हमारे पास क्या रह गया? We still have E's left. तो यहाँ पे E's कहीं पर आ रहे होंगे, ठीक है, तो हमने उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको 3 फैक्टोरियल से। That's what we got to do here, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब फिर हमें देखना है कि इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास अंदर वाले बॉक्सेस आए हैं, इनको कैसे फिल करें? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपके पास टोटल 11 लेटर्स थे, उनमें से 2 आर्स तो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिए, बट यू डोंट नो व्हाट अदर 3 लेटर्स आर गोइंग टू बी हियर। यहाँ पे बाकी 3 लेटर्स कौन से होंगे, तो आपको वो भी डिसाइड करना है कि उन 9 में से हम कौन से लेटर्स यहाँ पे प्लेस कर रहे होंगे, ठीक है। इसका क्या तरीका होएगा? we've got 9 टोटल लेटर्स, उनमें से 3 को यहाँ पे अरेंज करना है। इसके जो केसेस हमारे पास बन रहे होंगे, लेट मी एक्चुअली कीप दिस ऑन अ साइड हियर, जो यहाँ पे 3 लेटर्स प्लेस करने के हमारे पास केसेस बनेंगे, आउट ऑफ दोस 9 लेटर्स we have to arrange 3 letters. This is going to be 9p3. 9p3। ये इस तरह से हम क्या करेंगे, टोटल 9 लेटर्स जो बाकी रह गए थे, उनमें से 3 को यहाँ पे अरेंज कर देंगे, and that's going to give us 9p3 multiplied by this. अब you might be thinking कि अच्छा उसमें तो e's भी आ सकते हैं। e's जो आ सकते हैं हमारे पास, e जहाँ पे भी आ जाएगा, लेट्स से एक ही यहाँ पर आ गया, एक ही यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, इनकी जो रेपिटेशंस हैं वो 3 फैक्टोरियल यहाँ पे ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा आएगा, तो वो उससे हैंडल हो जाएगी यहाँ, ठीक है। सो यू मल्टीप्लाई दिस, यू मल्टीप्लाई 9p3 into 7 factorial and then divide by 3 factorial, and that's going to give you your final result, okay। R's को अरेंज करने का यहाँ पे की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, तो 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ही हो जाएगा अगर आप इसको अरेंज करने की कोशिश पे करते हो। So this is what we get. This is one way to do it, right? This is one way to do it. There are many other possibilities. आप और तरह भी देख सकते हैं. But let me know if there are any confusions on this, because this is slightly tricky. If there are any problems in this, let me know. एक तरीका इसको ये सोचने का, एक और तरीका ये हो सकता है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस तरह कर लें. Let's show that to you as well. Let's say, yeah, we can actually do it below here. इसको evaluate कर लें. ये मेरे पास क्या आता है आंसर इसका? 4 2 3 3 6 0. Okay, that's what you should be getting from this. Now let's try another method. एक और तरीका इसका क्या हो सकता है, हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह से प्लेस कर दें. We've got R here and then we've got R here. ये दोनों हमने फिक्स कर दिया. And then what we're saying is there are 3 spaces in between, and how many spaces are we left with? 1 2 3 4 5 6, right? It's very similar to what we've done before actually. अब हम इस तरह से सोच लें कि ये बॉक्स जो हमने ये वाला बॉक्स बनाया जिसके अंदर 5 लेटर्स आ रहे हैं, ये कितने प्लेसेस पे आ सकता है? इट कैन आइदर स्टे हियर, या तो यहाँ पे रह सकता है, या ये एक स्टेप राइट में मूव कर सकता है, इधर आ सकता है. दैट्स द सेकंड पॉसिबिलिटी कि ये ब्लैंक लेफ्ट पे आ जाए और बॉक्स जो है उसके दरमियान में आ जाए. दैट्स अनदर पॉसिबिलिटी, राइट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट. एक ये हो सकता है कि ये पूरा बॉक्स इधर आ जाए और फिर राइट साइड पे आपको कितने लेटर्स बच जाए? 5 लेटर्स राइट साइड. एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 लेफ्ट पर आ जाए और ये बॉक्स यहाँ पे दरमियान में आए, फिर आपके पास 1 2 3 4 लेटर्स राइट पे आ जाए, एंड सो ऑन. हाउ मेनी सच केसेस डू वी हैव? एक तो ओरिजिनल पोजीशन पे अभी है, या यहाँ पर आ सकता था. 2 केसेस, 3 4 5 6 7. There are 7 such possibilities. There are 7 such possibilities. Okay, there are 7 such possibilities. Now,
we've got 7 possibilities for that. We can say this is 7 cases ये हो गए बॉक्स के मूव करने के. अब बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी हमने 9 लेटर्स को अरेंज करना है. सिर्फ 9 लेटर्स को अरेंज करना है किन स्पेसेस के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इन 9 स्पेसेस में बाकी 9 लेटर्स को अरेंज करना है. वो क्या हो जाएगा? सिंपली 9 लेटर्स हैं टोटल, राइट? उसका हो जाएगा हमारे पास 9 फैक्टोरियल. And then, since there are 3 E's amongst those 9 letters, we have to divide by 3 factorial because of that, right? And that should give you the same result, right? So you can try this 7 into 9 factorial divided by 3 factorial. And that also gives me 42360. That's another way to think about this. Okay, फरजान 9p3 बेसिकली यहाँ से आ रहा है. हमने ये बॉक्स तो फिक्स कर दिया ना कि एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास 5 लेटर्स होने चाहिए. एग्जैक्ट इस बॉक्स के अंदर 5 लेटर्स होने चाहिए. बट वी डोंट नो what other 3 letters are going to be apart from the 2 R's. R के अलावा जो बाकी 3 लेटर्स हैं उनका हमें नहीं पता. अब उसमें तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन 3 ये जो 3 letters हैं यहाँ पे they are M, E and T. That's one possibility. Another possibility could be that these letters are, I don't know, N and then Q and N, Q and T. This could be another possibility. Now there are many such cases like this. How many cases are there like this? 9p3 because हमने उनको 9 letters को arrange करना है in 3 places के अंदर. That's going to be 9p3. ठीक है? और you could also do 9p3 की जगह ये भी कर सकते थे. 9 में से आप 3 letters choose कर लो, 9c3, and then you arrange those 3 letters. That would be 9c3 into 3 factorial. That's basically the same thing as 9p3. They are equivalent. तो दोनों तरह से सोच सकते हैं. या तो 9c3, 9 में से 3 letters choose करो, उनको arrange कर दो वहां पे, या फिर आप डायरेक्टली 9 में से 3 letters को arrange कर दो like that. ठीक है? जो e's हैं आपके पास, जो e's repeat हो रहे हैं, वो आपका ये 3 factorial automatically already handle कर रहा है वहां पे, right? तो वहां पे handle हो चुका है. I hope that makes sense now. Okay, so these are 2 ways of thinking about this. Again, it's slightly tricky, but you'll see some other questions in the recent past papers like this as well. Do have a look at them as well. इसी तरह के 2 letters के दरम्यान में इतने letters होने चाहिए. You will have the same method for them as well. Okay, let's move on now. Part D of this. Now it says 5 of the 11 letters in the word requirement are selected. 5 of the 11 letters in the word requirement are selected. How many possible selections contain at least 2 E's and at least 1 R? At least 2 E's and at least 1 R. अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम्स को करने का एक थोड़ा सा आसान तरीका ये होता है कि जो आपको मिनिमम नंबर चाहिए उनको तो आप कहो कि ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं. एटलीस्ट 2 E's चाहिए ना, तो 5 में से यू नो फॉर श्योर कि 2 E's तो आएंगे ही वहां पे, राइट? यू आर श्योर अबाउट दैट. एंड यू नीड एटलीस्ट 1 R. दैट मीन्स एक R भी आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है. ठीक है? 5 में से ये 3 लेटर्स तो दे आर श्योर शॉर्ट, ये तो आने ही आने, राइट? इसको तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है. What other letters are we left with? We're left with, let's write them down. We're left with R, Q. अच्छा, E एक select हो गया, दूसरा भी select हो गया. We still have 1 E left. एक E हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं. इसको end पे लिख लेते हैं. पहले non-repeated letters लिख लें. R, Q, U, and then we have I. Non-repeated लिख रहा हूँ मैं पहले. Q, U, I. And then I have M and N and T. अच्छा, ये तो वो letters हैं, 6 letters जो repeat नहीं हुए. अब देखें, there were 2 R's, 1 R here and another R here. एक तो already select हो गया,
एक आर को वहां से रिमूव कर दो, ये अच्छा तरीका है। आप यहाँ से एक काट दो, एक आर खत चला गया, एक और एक ई भी चला गया, एक ई भी चला गया। वी स्टिल हैव वन आर लेफ्ट एंड वन ई लेफ्ट, वो भी यहाँ पे लिख लेता है, वन आर एंड वन ई। ये आपके पास लेटर्स रह गए, ये आपके पास लेटर्स रह गए। अब आप क्या कर सकते हो, there's actually a direct way of doing this now. A direct way of doing this now. Why? Because now the remaining letters are all the same. Are all different. They're not the same. They're all different. सारे different हैं, इनमें कोई भी repetition नहीं है। जब repetition नहीं होती हमें cases बनाने की जरूरत ही नहीं है। इन 8 में से हमें कितने letters select करने हैं? हमें 8 में से 2 letters और select करने हैं इन 2 places के लिए। The quickest way to do this would be you just say it's 8C2 because of this reason, because बाकी letters में से कोई भी repetition नहीं है, ये directly क्या हो जाएगा, it's going to be 8C2 and that's going to give you 28, just a one-liner, and that gets you 4 marks, just a one-liner. ठीक है, this is one way to do it. This is one way to do it कि आपने जो select कर लिए हैं वो तो already हो गए हैं, ठीक है, बाकी letters में आप select कर लें। Yes, that's correct, Iman. If it had said कि exactly 2 E's चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 2 E's तो already select हो चुके हैं, थर्ड E को आप कंसिडर नहीं करोगे बाकी सिलेक्शन के लिए, you'll remove it from there. ये आप यहाँ से खत्म कर दो कि आप कहोगे टोटल 7 लेटर्स रह गए, बाकी 7 लेटर्स में से आपने सेलेक्ट करने। अगर उसने कहा होता कि exactly 2 E's चाहिए, फिर आप कहोगे 2 E's सेलेक्ट हो गए, बाकी आपके पास रिमेनिंग जो रह गया उसको आप देख लें। Alright, so this is one way to do it. This is the quickest way of doing it in this particular case, because जो बाकी लेटर्स रह गए हैं उसमें कुछ भी रिपीटेड नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो 8C2. Another way to do this is जो आप लोग में से अक्सर करते हैं, and that's also fine, that takes slightly more time, and that's going to be that you make different cases for the repeated letters. जो repeat हो रहे होते हैं letters उनके cases बना ले, right? जो repeat हो रहे होते हैं उनके cases बना ले। अच्छा, क्या क्या possibilities हैं? आपको ये तो पता है 2 E's तो आने ही है और एक R भी आना ही है, ठीक है। फिर आप क्या कहें कि अच्छा अगर मेरे पास बाकी 2 letters E और R के अलावा कुछ और आ रहे हो, E और R के अलावा कुछ और आ रहे हो, वो क्या possibilities हैं? कितने बाकी letters हैं मेरे पास E और R के अलावा? I've got 6 other letters. I'm going to write them here. QUIMNT. तो बाकी 2 letters जो हैं E और R के अलावा कुछ हैं, यहाँ पे E और R के अलावा कुछ मेरे पास letters आ रहे हैं, उनकी कितने possible selections हो सकती हैं? Out of these 6 letters, I've got to select 2. So that's 6C2. ठीक है, एक मेरे पास ये केस हो गया कि 2 E's आ रहे हैं और 1 R आ रहा है। अच्छा, एक और केस क्या हो सकता है, that I have 3 E's and 1 R. This is also one possibility, because ये आपकी condition को satisfy करता है कि 3 E's हो जाए आपके पास और 1 R हो जाए। Now I've got 1 remaining letter to select. उसके कितने cases हो जाएंगे? That's just going to be 6C1. बाकी 6 letters में आपने सिर्फ एक select करना, ठीक है? This is another case. First case, second case. एक और case क्या हो सकता है? आपके पास E R तो आ रहा था पहले, अब आप क्या कहें, E भी एक और select कर लें और R भी एक और select कर लें। अब ये तो आपने सारी selection already कर ली, what are we left with? We don't have to select anything else. बाकी 6 में से तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए. So this is one possible case, right? You can say बाकी 6 में से you don't have to select anything. Okay, this is another possibility. और क्या हो सकता है? You could have 2 E's like before and 2 R's. This is another possibility. और जो 6th letter है फिर वो 5th letter है वो कुछ और हो जाए. So that's going to be 6C1 as well. बाकी 6 में से कोई भी एक select कर लें. 6C2 evaluate कर लें. I think it's 15. 6C1 is 6. 6C01 होता है. 6C1 is also 6. You add all of them up, and that gives you 28 as well. So that's another way to think about this. ठीक है? So this is what we have. ये आपके पास है last problem. Last part हो गया इसका. Let's move to
the other paper now, that's May June 2021, paper 5.2. इसका question number 6 हमें ये भी देखना है. Now, this is a question that I've been asked so many times in the past few weeks, because there really isn't. So I was just before the session, I was looking at all the previous papers. मैं सारे देख रहा था letters वाले questions, and this is basically the only question like this in the papers, in the past papers. इसके last part में there is a slight issue in the sense it's different from what we've been doing before. तो इसमें थोड़ी सी एक नया जो है वो आइडिया हमें यूज करना है. Selection instead of selections. Iman, I don't understand your question. But it says selection instead of selections. What does that mean? अच्छा, let's do this and then we will come back to that. ठीक है, एक दफा ये कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं. Okay, so this is question number 6 from paper 5.3 now. Paper 5.2. Find the total number of different arrangements of the 8 letters in the word tomorrow. You start में उसने आपको आसान marks दे दिए, ले लो अभी marks आसान, बाद में आपसे वो cover up कर लेगा. Tomorrow, that's 8 marks, that's 8 letters, right? So that's just 8 factorial divided by how many repetitions do we have? O and O, so that's 3 factorial. And then we have R and R, that's 2 factorial. ये आपके पास ये आ जाएगा पहले. ठीक है, that's the first part. Let's evaluate this. ये देख लें क्या आता है आपके पास. 8 factorial over 3 factorial and 2 factorial. What do we get in this case? So this is 3360. 3360, that's the first part. Okay. Now the second part says find the total number of different arrangements of the 8 letters of the word tomorrow that have an R at the beginning and an R at the end, and in which the 3 O's are not all together. Okay, so they are not all together. सारे साथ नहीं हो सकते, 2 साथ हो सकते हैं, that's allowed. तीनों साथ नहीं हो सकते. Okay, so it's very important to understand the statement correctly. Okay, now there are 8 letters in total, so we've got 1 R at the beginning, 1 R at the end, and it looks something like this. ठीक है. How many letters do we have in the middle? We have 6 letters in the middle. अब दरमियान में क्या हो सकता है? हमारे पास बाकी लेटर्स कौन से रह गए हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं. TOMOOW. These are the letters that we're left with in the middle. Now, what we want is we want 3 O's not all together. अच्छा देखें, ये साइड वाले R's तो फिक्स हो गए ना, अब उनके तो कोई काम ही नहीं अरेंजमेंट के अंदर. उनको आप भूल जाएंगे तरह से. दरमियान वाले 6 लेटर्स से हम डील कर रहे हैं. R's तो आपने फिक्स कर दिए हैं, उनको कुछ भी नहीं करना आपने. ठीक है. Now, since you want O's to be not together, आप क्या करें, उनके टुगेदर वाले केसेस फाइंड कर लें, टोटल में से माइनस कर दें. टुगेदर वाले केस फाइंड कर लें, उनको टोटल में से माइनस कर दें. नाउ व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, वो फिगर आउट कर लें. टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, हाउ मेनी आर दे गोइंग टू बी? R's तो फिक्स्ड है ना, दरमियान में 6 लेटर्स की कितने अरेंजमेंट्स होंगी? 6 फैक्टोरियल. बट देन वी गॉट 3 O's देयर. O आपके रिपीट हो रहे हैं, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए. इसको इवैल्यूएट कर लें, देखना पास क्या आता है. अब हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट्स विद ओज टुगेदर. ओज को हम अगर इकट्ठा कर दें, उसमें क्या आएगा? अच्छा, नाउ व्हाट डू वी डू इन दिस केस? अगेन आर्स तो फिक्स्ड है, उनको आप भूल जाएं बेशक. दरमियान में क्या हो रहा है, 3 ओज एक बॉक्स में आ गए, और बाकी कितने बॉक्सेस रह गए आपके पास? ये लेफ्ट विद 3 अदर बॉक्सेस. हाउ मेनी अरेंजमेंट्स डू वी हैव फॉर दिस? आउटर बॉक्सेस आपके पास कितने हैं? 4.
उनकी अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी? उनकी अरेंजमेंट्स आपके पास हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल। बॉक्स के अंदर यहाँ पे ओस की अरेंजमेंट्स, दैट्स वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, देयर सारे आइडेंटिकल है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इज 4 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा फिर यहाँ से? फिर से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जहाँ पे ओस टुगेदर नहीं है, that's going to be total, that's 6 factorial over 3 factorial minus when the case when they are together, and that's going to give us the final result. ठीक है, ये देख लेते हैं क्या आता है। 6 factorial is 720 divided by 6 minus 24 and that turns out to be 96. This is 96, ये हमें चाहिए था इस पार्ट के अंदर, ठीक है। That's part B. Now let's look at part C of this. Part C of this. It says 4 letters are selected at random from the 8 letters of the word tomorrow. Okay, so it's very similar to what we did in the very last question. दूसरे पेपर के अंदर कुछ letters select किए out of a bunch of letters. There are 8 letters in total. Find the probability. So now we're looking at probability. We're not talking about number of possible selections. We're talking about probability. Find the probability that the selection contains at least one O and at least one R. At least one O and at least one R. Now, how do we think about this? हम क्या करते थे इस तरह के केसेस के अंदर? Let me do it that way. जिसको हम पहले करते आए हैं कि number of cases find कर लें, number of cases find कर लें that satisfy the condition and then divide that by the total number of cases. ठीक है, अगर हम वो करते तो उसमें क्या करते हैं, हम वो सारे केसेस बना लेते पहले कि आपके पास कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने केसेस बनते हैं, ठीक है। सो यू कुड मेक केसेस लाइक दिस, लेट मी जस्ट राइट देम डाउन। एटलीस्ट 1 O होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं वी गॉट 1 O, एटलीस्ट 1 R, so we have 1 R for that as well. We got at least 1 R. अब बाकी 2 लेटर्स हमने देखने हैं कि वो क्या होंगे, ठीक है। अच्छा, अब टुमारो में से अगर आप एक O खत्म कर दें और एक R खत्म कर दें, ये तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, दैट्स ऑलरेडी गिवन। यू हैड 4 लेटर्स इन टोटल, बाकी आपने 2 लेटर्स और सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 2 लेटर्स और सेलेक्ट करने हैं। अब बाकी जो 2 लेटर्स और सेलेक्ट करने हैं वो इन बाकी लेटर्स में से आएंगे, और आर के अलावा बाकी क्या क्या रहेगा हमारे पास? लेट मी जस्ट राइट देम डाउन हियर, TMOROW। अब इसमें O रिपीट हो रहा है, O रिपीट हो रहा है, तो उसके हमें केसेस अभी भी बनाने पड़ेंगे, राइट, कि O के साथ आपके क्या क्या केसेस बनते हैं वो हम फिगर आउट कर लेते हैं। अच्छा, एक तो आपका केस ये हो गया कि इसका मैं कैसे लिखूं, राइट दिस वे, एक O है एक R है, एक O है एक R है, इसको इस तरह से अगर लिख लें, आई थिंक इट्स ओके। एक O है एक R है, और जो बाकी 2 हैं दे आर समथिंग एल्स, बाकी 2 हमारे पास OR के अलावा कुछ और चीज, ठीक है। अच्छा, एक ये केस हो गया, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, अच्छा नहीं खैर, लेट मी से X represents neither O nor R, ठीक है, X से रिप्रेजेंट कर लिया, बाकी 2 मैंने X कर लिया, ठीक है। अच्छा, that's one possibility. Another possibility could be, since it says at least 1 O and at least 1 R, तो एक से ज्यादा तो हो सकते हैं। Another possibility could be O, there could be 2 O's and then 1 R, and then the fourth thing could be something else. एक ये केस हो गया हमारे पास, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक हमारे पास ये हो सकता है कि we have 1 O and 2 R's, एक ये केस हो सकता है, ठीक है। हमारे पास R's कितने थे यहाँ पे लिख लेते हैं, we had 2 R's in total and we had 3 O's in total, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, वे फोर्थ हमारे पास कुछ और हो जाए। अच्छा, और क्या हो सकता है? we could have 2 O's and 2 R's, this is another possibility कि वही चारों आ जाए,
और क्या हो सकता है, ओस क्योंकि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-2 वाले केसेस हमने सारे देख लिए, 1-1, 1-2-1, 1-2 and then 2-2. Yeah, so now we could have 3 O's, that's also possible, O and then R. ये हमारे पास डिफरेंट केसेस बन गए इस केस के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करें, इनके फाइंड कर लें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं। फर्स्ट में आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, कितने लेटर्स में से, ओ आर के अलावा कितने लेटर्स आपके पास रहते हैं, यू गॉट टी एम हियर एंड डब्ल्यू हियर। बाकी 3 लेटर्स में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 3C2, 3 में से आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, एक लेटर सेलेक्ट करना है कितने में से, टी एम और डब्ल्यू में से, राइट। टी एम और डब्ल्यू है आपके पास सिर्फ ओ आर के अलावा, 3 में से आपको 1 सेलेक्ट करना है। ये कितना हो गया, अगेन 3 में से 1 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना है आपको, बाकी 3 में से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 0 सेलेक्ट करने हैं। इसमें कुछ करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, 3 में से 0 सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी केसेस डू वी गेट फ्रॉम दिस, या इवैल्यूएट कर लें। 3C2 3 होता है, 3C1 3 होता है, 3C1 भी 3 होता है, 3C0 1 होता है, 3C0 1 होता है। All of this ends up giving you 11 at the end. So there are 11 possible cases that satisfy your condition. There are 11 total cases that satisfy your condition. ठीक है। Now you might think कि अच्छा ये 11 केसेस बन गए, अब मैं फाइंड कर लेता हूँ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। वो भी एक्चुअली इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड करना, बिकॉज देयर आर रेपिटेशंस देयर। टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड करना फॉर द 4 लेटर्स, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। वो आप फाइंड कर लें, इसको उससे डिवाइड कर दें, but it's even if you were able to do all of that, it's not going to give you the correct result. And now let's try to understand why that is the case. Let's try to understand why we are not going to get the correct result if we were to do this. और अब हम इसमें instead हमें क्या करना पड़ेगा? Let me give an example. Let's say we've got these letters. So let's take a simplified example. Let's take this example A. So I've got 5 A's here, or let's do even more to be more clear. I've got 6 A's here, and I've got 2 B's here. How many total letters do I have here? I've got 8 letters in total. 2 of these 8 letters are selected at random. Find the probability that both of them are B. Acha. Now, if I were to use the same method here, what is going to be the total number of cases? क्या मेरे पास cases हो सकते हैं of selecting 2 letters out of these? क्या हो सकता है? A's हो सकते हैं, A हो सकता है, that's one possibility. दोनों A's हो, right? एक case हो सकता है. Another case could be, एक case है कि दोनों A's हो. एक case हो सकता है कि एक A हो, एक B हो. Select कर रहे हैं तो order matter नहीं करता. Another possibility is we've got BB. These are the only 3 cases that we've got. Now, if I were to use the same logic that I used here, कि मैं यहाँ पे 11 मैंने फाइंड कर लिए और 11 को उसमें डिवाइड कर देता, जो भी आपका टोटल होता, अगर मैं फाइंड कर लेता टोटल भी. If I were to use the same logic here, what would I get? Probability that both of them are B. What am I going to get here? There's one case out of 3 that's giving me BB. So probability, it appears, of both being B is 1/3. Look at the letters. Does that make sense? There is equal chance of getting AA and AB and BB. क्या तीनों की probability आपको equal लग रही है? Just by looking at this, what does your intuition say? AA की और BB की probability क्या equal हो सकती है? आप 2 letters यहाँ से randomly select कर रहे हो. Now, of course, the number of A's is more as compared to the number of B's. तो A की probability ज़्यादा होगी, A होने की probability बहुत ज़्यादा होगी as compared to getting BB's, right? So the problem is the cases that you have, they do not have equal probabilities. जो cases आपने बनाए हैं, इनकी probabilities equal नहीं है, क्योंकि A की probability different आने की, B की probability different आने की. So it's not
So all of those cases do not have equal probabilities. तो आप उनको same weight assign नहीं कर सकते हो. आप ये नहीं कह सकते हो कि ये cases हैं तो there is 3 out of whatever chance of getting this, and then there is 1 out of whatever chance of getting this, because ये इस तरह के एक केस बन रहा है, इस तरह के 3 cases बन रहे हैं. You can't say that because इन सब के weights different होंगे. आपके पास number of letters जो आ रहे हैं, R 2 आ रहे हैं, O's 3 आ रहे हैं, सारे letters के आने की equal probabilities नहीं है. ठीक है? So that's why this method is not going to work here. That's the first thing to understand why our normal method does not work here. तो यहाँ पे क्या मसला क्या है? अगर आप उसने आपसे number of cases find करने के लिए क्या होता? This would be correct. You would get 11 cases and that will be it. उसने number of cases नहीं पूछा, उसने आपसे probability पूछा है. So when you have probability to find in cases like this, और आपके पास यहाँ पे letters repeat हो रहे हो, ये जब दो चीजें हो, आपने probability find करनी है इस तरह के केस में, और letters आपके repeat हो रहे हैं, आप वो अपना standard method यहाँ पे नहीं use कर सकते. ठीक है? So this is not going to work. What do we do instead then? हमने करना क्या? ठीक है, ये हो गया कि ये हमने नहीं करना. जो हम पहले करते थे, जो हमारे पास different cases आते थे, उनकी probability सबकी equal होती थी. तो उसमें हम इस तरह की चीज यूज कर सकते थे. तो अगर ये सारे letters different होते ना, अगर ये सारे letters different होते, then it would work. But the problem here is the letters are not different. Some letters are appearing more number of times, some letters are appearing less number of times. तो इनकी सब हर केस की probability जो है वो different होगी. Just think about this example. जो number of cases हमने 3 बनाए हैं, इन सब की equal probabilities नहीं है. A की probability ज्यादा है और B की probability कम है, because A ज्यादा आ रहे हैं, B कम आ रहे हैं. Okay? Okay, thank you. All right. So this is what we are not going to use. ठीक है? ये हो गया कि हमने क्या नहीं करना. अब क्या करना है? करना क्या है इसमें? Okay. Now, in order to assign correct weights to all of those letters, what we're going to do is we're going to treat these letters like categories. ठीक है? हम क्या करेंगे, जिस तरह हम वो करते थे, questions like those, for example, we've got 20 people. ठीक है? उसमें से let's say there are 8 Pakistanis, there are 6 Indians, there are 6 Chinese. Okay, we've got 20 people and उसमें से 8 Pakistanis हैं, 6 Indians हैं, 6 Chinese हैं. आपने select करने हैं, let's say 5 लोग आपने select करने हैं. उसमें condition है कि अच्छा आपको you need at least one of each citizenship, right? At least one from each country. आपको ये चाहिए. तो उसमें आप किस तरह से cases बनाओगे? तो आपके पास क्या है? 3 categories of people है, लेकिन वो जो 20 के 20 लोग हैं, वो सारे different लोग हैं. They are not identical, they are all different. We're going to use that idea here as well. We're going to say there are 3 categories of people that we've got. The 3 categories of letters that we've got. एक हमारे पास R है, एक हमारे पास O है, और एक हमारे पास इन दोनों में के अलावा कुछ और है. इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ X के साथ. X से मैंने क्या डिनोट किया है? It's neither R nor O. तो जो लेटर्स रिपीट नहीं हुए, यानी एक दफा आ रहे हैं सिर्फ TMW, राइट? TMW वो सिर्फ एक दफा आ रहे हैं, उनको आपने अलग से डिनोट कर दिया. ठीक है? और जो रिपीट हो रहे हैं, उनको आपने इकट्ठे इस तरह से क्लब कर दिया. सॉरी, द अदर वे अराउंड. जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपने अलग से इस तरह से अलग अलग रिप्रेजेंट कर लिया. जो रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ एक दफा आ रहे हैं, उन सबको आपने क्लब कर लिया इन 1 कैटेगरी. ये आपने 3 कैटेगरीज बना दी. ठीक है? Farzan, yes, that's correct. So if you had to find the number of cases, then that 11 would be fine. ठीक है? अगर number of cases find करने होते उसके लिए वो सही होता. Probability के लिए that method is not going to work. Okay, because हर case की probability different होगी. अच्छा, हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम देखेंगे. Again, the idea is exactly the same as before, बस इसे calculation हम different करेंगे. Cases बना लेते हैं. यहाँ पे क्या बन रहे हैं हमारे पास? Cases क्या बनेंगे?
एक केस हमारे पास ये दोनों कंडीशंस मीट करनी है ना, एटलीस्ट 1 O होना चाहिए, एटलीस्ट 1 R होना चाहिए, और फिर बाकी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, what can we have? We can have 1 R total कितने यहाँ पे लिख लेते हैं, there are 2 R's in total. How many O's? There are 3 O's in total. बाकी letters कितने हैं? There are 3 other letters. ये हमारे पास बन गए, ठीक है। Now let's write down the possibilities. 1 R, 1 O, and then we could have 2 other letters. Total 4 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक possible case ये हो गया। Then we could have 1 R and 2 O's and 1 other letter. We could have 1 R and 3 O's and 0 other letter. ये तीन हमारे पास cases हो गए। Then we could have 2 R's, ये 1 R के साथ ये तीनों cases हो गए। 2 R's and then 1 O and 1 other letter. 2 R's and 2 O's and 0 other letter. Do we have any other case? इसके अलावा और कोई case बन गया यहाँ पे? That's it, right? These are the only 5 cases that we've got. और कोई case नहीं बन रहा, ठीक है। ये 5 cases बन गए। आपने उनको इस तरह treat करना है कि all of these are different letters, ठीक है। Treat इनको different letters की तरह करने हैं। हमने इनको एक तरह से categorize कर दिया। हम लोग categorize कर दिया कि R category के 2 हैं यहाँ पे, O category के 3 है, X category के हमारे पास 3 है, ठीक है। X means neither R nor O. अब इसको नॉर्मली जो हम कैटेगराइजेशन वाले क्वेश्चंस में करते हैं वही करेंगे। इससे फायदा क्या होएगा, वो प्रोबेबिलिटी वाला आइडिया जो है वो प्रोबेबिलिटी सब केसेस की हमारे पास वो एडजस्ट हो जाएगी, बिकॉज नाउ वी आर कंसिडरिंग एवरीथिंग एज डिफरेंट, राइट। आर्स को भी हम डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, ओस को भी डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी उससे एडजस्ट हो जाएगी। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम दिस? इससे हमारे पास केसेस कितने बने? Out of 2 R's, we've got to select 1, so that's 2C1. Out of 3 O's, we've got to select 1 O's, 3C1. Out of 3 X's, we've got to select 2, so that's 3C2. Yeah, हमारे पास एक हो गया। Then you've got 2C1 into 3C2 into 3C1. We have 2C1 into 3C3 into 3C0. 2C2 into 3C1 into 3C1, and finally we've got 2C2 into 3C2 into 3C0. ये सारे cases evaluate कर लें, उनके पास total आ जाएगा। You can see what that turns out to be. 2 into 3 into 3C2, that's 3 also, that's going to be 18, right? 2 into 3 into 3, 18 हो जाएगा। 2 into 3 into 3, that's also 18. 2 into 3C3, 3C3 1 होता है। 2 into 1 into 1, that's going to be 2. 1, 2C2 is 1, 3C1 is 3, 3 and 3, that's going to be 9. And then we have 2C2, that's 1, 1 and 3, and then 1, so that's going to be 3. ये आपके पास सारे cases आ गए। You can add all of them up. ये आपके पास क्या बन गए? 36 plus 2, that's 38. 38 plus 12, that is 50. ये आपके पास 50 cases बन गए। What's the total number of cases without any restrictions? ये at least one or at least R वाले restriction खत्म कर दें। Total cases आपके पास कितने बन रहे हैं? Again, remember we are considering all letters as different. सारे letters को हम different consider कर रहे हैं, तो फिर हमारे total cases कितने बनेंगे? 8 letters हैं, 4 select करने हैं, that's just 8C4, right? इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारों को different consider कर रहे हैं, so that's just 8C4. 8C4 gives us 70. What's the probability then? Probability that we were looking for, that's going to be 50 over 70 or 5 over 7. That's what we get. Okay, so that's what we do in this case. कब ये करना है? जब probability आपको find करनी है और कुछ letters repeat हो रहे हैं, उनमें से आपने कुछ letters select करने हैं. You'll have to do something like this. You'll have to treat all letters as different and then do it like this. Yes, exactly. So we're treating them as different, just like you're talking about people or anything else. हम उनको identically treat करेंगे. That's the only thing that we're doing here.
हम लेटर्स को आइडेंटिकल नहीं ट्रीट करेंगे, यहाँ पे उनको डिफरेंट ट्रीट करेंगे, एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस यू नो। ठीक है, इससे होगा क्या, वो जो प्रोबेबिलिटी क्योंकि सब केसेस की सेम नहीं थी, वो केस वो बेसिकली जो है यहाँ पे मैनेज हो जाएगा उस तरह से। यस, सो अगर हमें नंबर ऑफ केसेस फाइंड करने होते हैं, वो तो वही मेथड होता है जो हम पहले करते हैं, वो तो आपके पास नंबर ऑफ केसेस तो वही 11 ही बन रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए पूछ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इस तरह से उनको डिफरेंट ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस टू एवरीवन। सो बस ये आप अब जहन में रख लें, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही हो और रिपीटेड लेटर्स हो तो आपको उनको डिफरेंट ट्रीट करके इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक फॉर दैट। क्यों? क्योंकि हर केस की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। अगर हम उनको रिपीटेड ही कंसिडर करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज जो है इक्वल नहीं होती, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते उस तरह से। The next one now, question number 5. Okay, Rahman and Sanjay are members of a quiz team which has 9 members in total. Okay, so this quiz team has 9 members in total. 2 photographs of the quiz team are to be taken. So there are 9 members. 2 photographs are to be taken. For the first photograph, 9 members will stand in a line. Okay, so all 9 members are standing in a line. How many different arrangements of the 9 members are possible in which Rahman will be at the center of the line? Okay, so we've got 9 members. What we can do is we can just draw a set of boxes here. Okay, so there are 9 members in total. And Rahman is right in the middle. So यहाँ पे center में. There are 4 boxes towards the left of him, 3 to the right of him. ठीक है? R is right in the middle. अब बाकी boxes के लिए R को तो change नहीं कर सकते ना, R is fixed. बाकी जो remaining boxes हैं, उनमें हम कैसे arrangements कर सकते हैं? उनमें हम कैसे arrangements कर सकते हैं? How many possibilities do we have for the first box here? इसमें कितने आपके पास options हैं first box के लिए? 9 members in a total. First box के लिए कितने options हैं? You've got 8 options for the first box. What about the second box then? You've got 7 options for the second, and then so on. 6, 5, 4, 3, 2, 1. It turns out to be 8 factorial. R आपने fix कर दिया था, बाकी 8 आपके पास रह गई. हर एक के लिए आपके पास आपने 8 से start किया. First box के लिए 8 options, second के लिए 7 options, and so on. It's just 8 factorial. Okay, Fazan, how did you get that? 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial. What's the thinking process behind that? That's not correct, but what were you thinking? Okay, so I understand what you're doing. आपने क्या किया है? आपने कहा है कि ये 4 लोग लेफ्ट पे होंगे इसके और ये 4 राइट पे होंगे. आपने डिसाइड कर लिया है कि कौन से 4 लेफ्ट पे हैं, कौन से 4 राइट पे हैं. You can't do that. We don't know कि कौन से 4 लेफ्ट पे हैं, कौन से 4 राइट पे हैं. That's what you've done. 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial का मतलब है आपको पता है कि कौन से 4 लेफ्ट पे होंगे, कौन से 4 राइट पे होंगे, फिर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया to interchange them. But that doesn't work here. Why? Because हमें नहीं पता कौन से राइट पे कौन से लेफ्ट में. So this is the way to do that, right? 8 into 7 into 6 and so on. That's 8 factorial. Now you cannot leave it as 8 factorial. ये आपको evaluate करके लिखना है. आप ये ना सोचेंगे 8 factorial exact value तो बस मैं इतना छोड़ देता हूँ. इसका आंसर लिखने का मार्क होगा. So 8 factorial आप evaluate करेंगे और देखेंगे वो क्या होता है. 8 factorial कहाँ चला गया? So this turns out to be 40320. ठीक है? That was this one mark. Let's look at the second part.
How many different arrangements of the 9 members are possible in which Raman and Sanjay are not next to each other? Now, this is a standard question on permutations. ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि इसमें क्या करते हैं. 2 लोग हैं, they should not be next to each other, right? So this is a pretty standard question. कुछ सोचने वाली बात नहीं है. हमने बहुत दफा किया हुआ है. What we do, so there are 2 possibilities. There are 2 ways of thinking about this. We can find, so there are only 2 people. So हम क्या कर सकते हैं? We can find the number of arrangements when they are both together. और फिर total में से minus कर लेते हैं. ठीक है? What's the total arrangements? Total arrangements without restrictions. They're going to be 9 factorial. ठीक है? ये आप देख लें क्या आती हैं. 9 factorial. Can somebody tell me what this turns out to be? नाइन factorial क्या आता है? 362,880. Okay, good. Thank you. That's the total number of arrangements. फिर हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं. अब दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या मतलब है इसका? We're going to make one box for those 2 people. उन दोनों को एक box के अंदर रख देंगे. So we have Raman and Sanjay in one single box. And how many boxes do we have left after that? 2 लोग तो यहाँ पर आ गए. We've got 7 boxes left. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. अब total number of boxes कितने हैं आपके पास? 8 boxes बन गए, right? That's 8 factorial. But then you also have to consider that R and S can interchange their positions. S पहले आ सकता है, R बाद में आ सकता है. There are 2 ways of doing that. So we multiply this by 2 factorial because of that RS की possibility के वो interchange कर सकें. That's going to give us something. Burhan is telling me that's 282240. That's the number of possibilities that they have for being together. ये आपका minus करने के बाद है. Okay, ये क्या आता है? 8 factorial into 2 factorial. 8 factorial into 2 factorial. $80640. Okay, so this is 80640. Now, what are the number of arrangements for which they are not together? अब not together का क्या हो जाएगा? Cases हमारे पास total में से हमने minus कर दिया ये 362,880 minus 80640, and we're going to get a result from this. Okay. Yes, Farzan, you can make these boxes on your answer sheet, of course. There's no problem with that. This is perfectly okay. And from this, we get 282240. Okay. This is the final result that we get from this. This is one way to do that. Okay. This is one way to do this. There's another possibility जो हम use करते हैं, especially when we want to separate more than 2 objects. लेकिन 2 objects के लिए भी वो use हो सकता है. Now let me just do that just for the sake of completeness, so you know about that as well. हम क्या करते हैं? जिन लोगों को हमने separate करना है, उनके अलावा बाकी सबको place कर देते हैं. जिन लोगों को separate करना है, हमने रामान और संजय को separate करना है ना, उनके अलावा कितने लोग रह गए? There are 7 people apart from them. उनको place कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जिनको आपने नहीं separate करना, उनको place कर लिया. अब रामान और संजय हैं जो हैं वो कहाँ पे आ सकते हैं? They can be in these positions. यहाँ पे रामान और संजय आ सकता है. ठीक है? तो अभी जो 7 places हैं बाकी लोगों के, उनके arrangements कितनी हो गई? 7 factorial multiplied by रामान और संजय की placements in these 8 positions. आपके पास ये 8 positions आ रही हैं दरम्यान में. 8 में से कितनी जगहों पे आपने उनको प्लेस करना है? 2 जगहों पे. That's going to be 8P2, right? 8 आपके पास spaces हैं, 2 लोगों को arrange करना है उसके अंदर. This would have given you your answer directly. ये आपको direct result दे देगा. This should give you 282240. So this is another way of thinking about this. कि आप उसको directly कर लो rather than doing total minus together. आप ये कर सकते हो. Generally, when you have
मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स इनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, हम अक्सर ये वाला मेथड यूज करते हैं वहां पर, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन. Now it says for the second photograph, the members will stand in 2 rows with 5 in the back row and 4 in the front row. In how many different ways can the 9 members be divided into a group of 5 and a group of 4? लेकिन ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, it doesn't really matter कि उनकी अरेंजमेंट क्या है, right? So this is basically combination. 9 लोग हैं टोटल, उनको आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में 5 होंगे, एक ग्रुप में 4 होंगे, ठीक है? Now how do we do that? किसी भी एक ग्रुप में पहले प्लेस कर दें, लेट्स से 5 वाले ग्रुप में पहले प्लेस कर दें, तो क्या होगा? उसमें कितने पॉसिबल आपके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ग्रुप्स आपके बन सकते हैं? 9C5, 9 में से आपने 5 चूज कर दिया, ठीक है? नाउ वंस यू आर डन विद दैट, बाकी कितने लोग बच गए? यू लेफ्ट विद 4 पीपल, और वो 4 के 4 आपके दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे, 4C4, दैट्स योर सेकंड थिंग. ये आप कर सकते हैं. अगर आप 4 वाला ग्रुप पहले चूज करना चाहो, दैट्स ऑल्सो ओके, आप वो भी कर सकते थे. 9 में से पहले 4 चूज कर लिए जो दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, बाकी कितने बचे? 5. 5 में से आपको 5 के 5 दूसरे ग्रुप में डालने पड़ेंगे. So you can do either of them, you get the same result from them. You're telling me it turns out to be 126. This is the final result here. ठीक है? So कोई भी ग्रुप आप पहले जो है वो चूज कर लें, उसके बाद बाकी जो है जितने भी रह जाएंगे वो दूसरे में चले जाएंगे. Okay? Good. All right. Finally, Fazan. That's good. Okay, let's move on to the next one. For a random division into a group of 5 and a group of 4, find the probability that Raman and Sanjay are in the same group as each other. Yes, permutations or combinations वाले question में ये होता है, you've got a lot of space, लेकिन उसके answers अक्सर 2-2 lines में, एक line में 2-2 lines में आ रहे होते हैं. So you don't get confused by that. अक्सर आपके 4-5 marks के कोई question हो, तो कभी-कभी वो 2 lines में हो रहा होता है. So the marks are mainly for the thinking process that you have to go through. Okay. For a random division into a group of 5 and a group of 4, find the probability that Raman and Sanjay are in the same group as each other. Okay, now that's interesting. They have to be in the same group. अच्छा, इसका क्या मतलब है? एक तो आपके पास 5 वाला ग्रुप है, so let's group of 5 को हम A कह दें, group of 4 को हम B कह देते हैं. A में 5 लोग आ सकते हैं, B में हमारे पास 4 लोग आ सकते हैं. These are the 2 groups that we have. Now they have to be in the same group. They have to be in the same group. Okay? They have to be in the same group. Now, what do we get from that? Since they have to be in the same group, that means either they are both in the first group, या तो दोनों यहाँ पे first group में, यानी कि रमान भी यहाँ पे और संजय भी यहाँ पे. This is one possibility. The second possibility, they are both in the second group. वो दोनों second group के अंदर. ठीक है? Now let's consider each of these cases one by one. First case में क्या होगा? अगर वो दोनों ग्रुप A में हैं, उसमें टोटल 5 लोग होने थे. अब 5 में से 2 तो आपने ऑलरेडी चूज कर लिए हैं. 5 में से 2 आपने ऑलरेडी चूज कर लिए हैं. How many are you left with? You're left with 2. You're left with 3 people that you still have to choose. Out of how many? Out of 9. Out of 7 now, in fact. Let me write that down here. Total हमारा कितना था पहले? इसको लिख लेते हैं, just to make sure. Total 9 था. 9 में से हमने 2 लोग ग्रुप A में डाल दिए. ग्रुप A में डाल दिए 9 में से 2 लोग. ठीक है? कितने बचे? 7 बचे. 7 में से अब हमें ग्रुप A में कितने और चाहिए? 3 और चाहिए. 7C3. बाकी कितने बच गए? 4 बच गए. 4 के 4 सेकंड ग्रुप में चले जाएंगे. 4C4 for the second one. ठीक है? Similarly, for the second case में क्या होगा? अब आपने ग्रुप B में वो दोनों लोगों को प्लेस कर दिया ऑलरेडी. ग्रुप B में आपने दोनों लोगों को प्लेस कर दिया ऑलरेडी.
अब जब ग्रुप बी में दोनों लोगों को प्लेस कर दिया तो बाकी कितने लोग बचे जो आपको ग्रुप बी में डालने हैं? टोटल में से 2 कम कर दें, 7 रह गए। 7 में से आपको 2 लोग इसमें और डालने, दैट्स 7c2। बाकी कितने बच गए? 5। वो 5 के 5 आपके यहाँ पे चले जाएंगे। You could do it the other way around as well, and that's perfectly okay. वो भी आपके पास सेम रिजल्ट ही आता। आप ये भी कह सकते थे कि अच्छा मैं ग्रुप ए में पहले प्लेस करता हूँ। ग्रुप ए में तो प्लेस करेंगे तो कितने लोगों से चूज कर रहे होंगे? 2 तो आपने यहाँ पे डाल दिया ना, 7 बचे हैं आपके पास सिर्फ। 7 में से आप 5 यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं और फिर 2 बच गए बाकी, दैट्स 2c2। यू कैन डू इट आइदर वे, जो मर्जी पहले कर लें, जो मर्जी बाद में कर लें, इट्स द सेम थिंग। यस फाज़ैन, दैट्स आल्सो फाइन, दोनों तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास केसेस बन गए। नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट। दोनों से हमारे पास क्या आता है? फर्स्ट केस से ये एंड आ रहे हैं ना कि ग्रुप ए में ये आएंगे एंड ग्रुप 2 में ये आएंगे, ग्रुप बी में। एंड देन वी हैव एन और बिटवीन दोस टू केसेस। डिफरेंट केसेस के दरमियान में और होता है, तो इन दोनों के अलग अलग इवेल्युएट करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट केस से क्या आता है? 7c3 is 35, ओके, 7c5 is 21। इन दोनों को ऐड कर दें, what do you get? The total number of cases in which Raman and Sanjay are together in the same group, the number of cases that we have for this is 56. ठीक है, number of cases that we have for this is 56. आपको probability चाहिए, आपको number of cases नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? We already have found the total number of cases in the previous part, 126. इसको divide कर दें 126 से। Yes, that's good, Burhan. So probability हमारे पास क्या आ जाएगी? Probability is going to be equal to 56 over 126, and that gives us 4/9. This is a probability. Okay, it's better to leave it as a fraction. इसको decimals में convert करने की जरूरत नहीं होती. You can just leave it like this. Let's start with this permutation and combination question. Now, this is one of the most difficult questions that you will find on permutations and combinations in the past papers. Not all of it, but just one particular part of it. So I actually spent a lot of time last year, quite some time last year on this, right after the exam, solving this. And I posted a video on that as well. And later, when the marking scheme came out, I was pretty disappointed because they had a different answer. But it turned out they revised that marking scheme recently, or उसको सही कर दिया। वो पिछला वाला answer did not really make any sense. Anyway, let's begin with this. In the first part, it says, find the number of different arrangements of the 9 letters of the word crocodile. Now, that's pretty straightforward. How many letters do we have here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have 9 letters. We have to find their arrangements. 9 letters की arrangements क्या होगी? 9 factorial, but we have to see if we have any repeated letters. So we have C, we have 2 C's here. That's 2 factorial. And then we have O and O. So we have 2 O's there. That's 2 factorial more. And that's it. We have 2 repetitions. So that's 9 factorial over 2 factorial to 2 factorial. And you can see what this turns out to be: 9 factorial over 2 factorial and 2 factorial. This is going to give you 90720. That gets you 1 mark in the first part. Let's look at the second one. Now it says, find the number of different arrangements of the 9 letters in the word crocodile in which there's a C at each end and the 2 O's are not together. Okay, now C should be at each end. So there are 9 letters in total. If we use that boxes representation that we use sometimes, let me have that here. So we have these boxes. There are 9 letters, so we need to have 9 boxes in total. So it's going to look like this. You have these 9 boxes. अब देखिए इसने कहा C's जो हैं वो ends पे हैं। इसका मतलब है एक C यहाँ पर होना चाहिए, एक C यहाँ पर होना चाहिए। इनको तो आपने फिक्स कर दिया। There are only 2 C's और वो आपने यहाँ से eliminate कर दिया। They're already fixed on the sides. अब दरम्यान में 7 letters रह गए हैं। उसमें उसने कहा है कि जो O's हैं वो साथ नहीं होने चाहिए। Now, how do you make that sure that the O's are not together?
Now there could be multiple ways of doing this. One possibility is कि आप total number of arrangements निकाल लें जिसमें ओ साथ हो या ना हो, हम कुछ वो कंसिडर नहीं करें. टोटल अरेंजमेंट्स इन 7 लेटर्स की क्या होंगी. सीज तो फिक्स्ड है ना, उनको नहीं छेड़ना आपने, वो तो साइड्स पे फिक्स्ड है, वो तो यहाँ पे कहीं पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, उनको उनके तो कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, दे आर आइडेंटिकल एज वेल. रिमेनिंग लेटर्स दैट वी हैव आर ROODILE. इनकी अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं. 7 letters, 7 factorial, 2 of them are identical, we have 2 O's, so we are going to have to do 7 factorial over 2 factorial for that. ये आपकी total arrangements होती हैं अगर हम कहते हैं कि कोई भी कंडीशन O's के ऊपर नहीं है. लेकिन अब उसने O's पे कंडीशन लगा दी है. वो O's पे क्या कंडीशन है कि O's जो हैं वो एक साथ नहीं हो सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, O's के साथ होने वाला केस आप फिगर आउट कर लें कि उनके साथ होने के कितने केसेस बनेंगे, उसको इसमें से टोटल में से सबट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास सारे वो वाले केसेस रह जाएंगे जब O's टुगेदर नहीं है. Now what is that case going to look like? Let me just draw that here, or maybe I can just copy this. ये आपने फर्स्ट केस बनाया है जिसमें कोई कंडीशन O's पे नहीं लगाई है. अगर आप अब O's पे भी कंडीशन लगा दो तो उसमें क्या हो जाएगा, हम साइड पे यहाँ पे कर लेते हैं. अगर O's पे कंडीशन लग जाएगी तो इसका मतलब यह है कि दोनों O's को हमें एक बॉक्स में डालना पड़ेगा. ये 7 बॉक्सेस हैं, O's को हम एक बॉक्स में डाल देंगे, 2 बॉक्सेस को मर्ज करके उसमें हम O's डाल देंगे. सो वी हैव 2 O's टुगेदर नाउ. अब इन 6 बॉक्सेस को मूव करवाना है, इनकी अरेंजमेंट्स देखनी है, इनकी कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, 6 फैक्टोरियल. और फिर O's की तो कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं होंगी बिकॉज O's तो आइडेंटिकल हैं. तो इसमें से हम माइनस कर देंगे जो टोटल अरेंजमेंट्स थी, हम 6 फैक्टोरियल माइनस कर देंगे. दैट इज गोइंग टू गिव अस द रिजल्ट. ऑलराइट, 7 factorial over 2 factorial minus 6 factorial. This is going to give us the result, and let's see what this turns out to be. This is giving me 1800. Okay, that's the number of arrangements that satisfy this condition. हमने total find कर लिया O's पे condition लगाए बगैर कि this is basically total वाला case minus the case where the O's are together. That is what we are using here. ठीक है? That was the part B of this. Let's move on. Part C says 4 letters are selected from the 9 letters in the word crocodile. Find the number of selections in which the number of C's is not the same as the number of O's. अच्छा देखिए अब क्या बात कर रहा है वो, selections की बात कर रहा है. Remember selection का मतलब है कि order matter नहीं करता, तो this is combination, right? कॉम्बिनेशन में जो रिपीटेड लेटर्स होते हैं ना, उनका बड़ा मसला होता है. उनके ना आपको केसेस बनाने पड़ते हैं, उनके साथ डायरेक्ट डील करने का कोई तरीका नहीं होता. तो जो रिपीटेड लेटर्स हैं उनके आपको केसेस बनाने पड़ेंगे. अब कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं. वी हैव सी कमिंग ट्वाइस, तो एक आप बना लें कि अच्छा सी के क्या केसेस हो सकते हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे. और हमारे पास ओ, वो भी रिपीट हो रहा है. 2 सीज हैं और 2 ओज हैं. बाकी कोई भी रेपिटेशन नहीं है, तो बाकी लेटर्स आपके पास कितने बचे, यू हैव 5 रिमेनिंग लेटर्स अपार्ट फ्रॉम दैट. सो अदर लेटर्स, इसको हम अक्सर एक्स से भी डिनोट करता हूँ. दीज आर द अदर लेटर्स दैट वी हैव, दे आर 5 इन टोटल. अब आपको देखने क्या आपके डिफरेंट केसेस बन सकते हैं जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ ओज और नंबर ऑफ सीज जो है वो सेम नहीं हो सकते. और आपको कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं, टोटल 4 सेलेक्ट करने हैं, टोटल 4 सेलेक्ट करने हैं. और ओज और सी का सेम नंबर नहीं होना चाहिए. अच्छा ये हो सकता है क्या दोनों 0 हो जाएं, वो भी तो सेम नंबर हो जाएगा, दोनों में कोई भी नहीं आ रहा, सो दैट वुड बी 0 0. सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट केस. ओके, तो क्या केसेस कंसीडर करें फिर. यू कैन हैव, let's say there's no C and 1 O, that's one possibility. तो बाकी आपको 4 letters total करने हैं, the other letters will have to be 3. अच्छा, अब फिर O's C अगर आप 0 ही रहने दें, O's अगर आप 2 कर दें, तो बाकी कितने लेटर्स हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे. ये 0 C के साथ ये आपके पास 2 केसेस बन गए. अच्छा अगर 1 C हो जाए, 1 C के साथ you could have either 0 O
and then the letter is 3, and the other letters could be 3, and then you could have 2 C's and maybe 1 O. That's another possibility, right? बाकी letters कितने होंगे? वो 1 होंगे. ये आपके पास 2 के साथ 2 cases. अच्छा, इसको ना ऑर्डर में लेकर चलते हैं. Let's actually not use this case. इसकी बाद में लिखते हैं. 0 में पहले लिखा था, 1 वाले केसेस कर लें ताकि ना वो मिस ना हो रहा हो. कोई 1 वाला और केस कौन सा हो गया? 1 हो गया. और इसमें ओ क्या हो सकता है? एक तो इसमें 0 हो सकता है, वो हमने कंसिडर कर लिया. 1 ओ नहीं हो सकता, 2 हो सकता है. उसमें रिमेनिंग लेटर्स कितने हो जाएंगे? फिर 1 रह जाएंगे. 1 वाले केसेस आपने कर लिया. अब 2 वाले केसेस देख लें. अगर C2 हो तो ओस कितने हो सकते हैं? यू कैन हैव नो ओस, दैट्स वन पॉसिबिलिटी. रिमेनिंग लेटर्स विल हैव टू बी 2. या आपके सी हो जाए 2 और ओस कितने हो जाए? 1 हो जाए, और बाकी रिमेनिंग लेटर 1 हो जाए. यू हैव दीज 6 केसेस दैट यू हैव. इन 6 केसेस के आपको नंबर ऑफ पॉसिबल वेज फिगर आउट करने हैं और उनको ऐड कर देना है. ठीक है. अच्छा देखें, सीज तो आइडेंटिकल हैं, ओस भी आइडेंटिकल हैं, तो इनमें तो हमें कोई सिलेक्शन नहीं करनी है सच, राइट? 2 में से कोई भी सी नहीं सेलेक्ट करना, तो वो तो खैर वैसे ही कोई मसला नहीं है. लेकिन 2 में से एक भी सी सेलेक्ट करना हो, इट डजंट रियली मैटर बिकॉज बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल. इसके कोई केसेस नहीं बने, इसके कोई कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे. इसमें आपको 2C1 करने की जरूरत नहीं है. इसमें आइडेंटिकल है, तो ये हमने एक तरह से बस ये कहा है कि C2 रखनी है, ओ इतने रखनी है. इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है बिकॉज सीज और ओज आपस में, वो सीज आइडेंटिकल है और ओज आइडेंटिकल, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज आपके पास बनेंगे वो अदर लेटर्स के बनेंगे जो सारे यूनिक लेटर्स हैं. तो अगर आपने 5 में से 3 लेटर्स चूज करने हैं, वो कैसे होएगा? यू वुड से इट्स 5C3. ओके. 5 में से फिर आपने 2 चूज करने हैं, दैट्स 5C2. देन अगेन 5C3, 5C1, 5C2 एंड 5C1. ये आपके पास सारे केसेस आ गए. 5C3 10 होता है, दिस इज आल्सो 10, दिस इज 10, 5C1 is 5, 5C2 is 10 and 5C1 is 5. All you have to do now is just add all of these cases up and that will give you the total 30, 40, 45, 50. So the total turns out to be 50. Okay? ये आपके पास total number of cases आ गए इस केस के अंदर. Let's move on and finally get to that part. It says find the number of ways in which the 9 letters in the word crocodile can be divided into 3 groups, each containing 3 letters, if the 2 C's must be in different groups. Okay. अब देखें, उसने कहा है 9 letters in total. You are dividing them into 3 groups. Groups की बात हो रही है. अब groups में order तो matter नहीं करता. This is combination, right? They're talking about 3 different groups, right? इसमें permutation नहीं है. This is combination. That's the first thing. अब 3 groups बनाने हैं, तीनों के अंदर 3 letters होने चाहिए. So it's going to be something like this. Let me do that here. So we have 1, 2, and 3. We have these 3 groups made here. ठीक है, ये 3 ग्रुप्स आपने बनाने. अब उसने क्या कंडीशन दी है? आपने 3 ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं कि जो 2 C's हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में होने चाहिए. 2 C's डिफरेंट ग्रुप्स में होने चाहिए. ठीक है. अब रिमेंबर, जब भी कॉम्बिनेशन आते हैं, जो रिपीटेड लेटर्स है ना, ये बहुत मसला करते हैं. इनके आपको केसेस बनाने पड़ते हैं. ठीक है. अब 2 C's तो उसने कहा है कि डिफरेंट आपने उसमें रखने हैं. तो आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे अच्छा, एक C अगर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, दूसरा C इधर प्लेस करना पड़ेगा किसी और ग्रुप के अंदर. ठीक है. अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत मैटर करती है. एक केस अगर ये बना रहे हैं हम, तो लेकिन आपकी जस्ट कॉपी दी क्योंकि हमें और चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पे ना कॉपी करके रख लेता हूँ, तो बहुत टाइम वेस्ट होएगा इस पे. अच्छा देखें, ये 2 डिफरेंट केसेस नहीं है कि अगर आप फॉर इंस्टेंस एक सी इधर रखते हैं, एक फर्स्ट ग्रुप में रख लिया और एक सेकंड ग्रुप में रख लिया,
और फिर आपने एक इसमें रखा और एक इसमें रखा, दे आर नॉट डिफरेंट केसेस, दे आर द सेम केसेस। क्योंकि देखिए ग्रुप्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये फर्स्ट केस और सेकंड केस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? बिकॉज आपने सी को, एक को यहाँ पे रखा हुआ है, एक को यहाँ पे रखा है, दो डिफरेंट ग्रुप्स में आ रहे हैं ना, इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स में है, इधर भी दो डिफरेंट ग्रुप्स में है, ग्रुप्स का कोई ऑर्डर तो नहीं है, ये दोनों सेम ही केस है, इनमें कोई आप ये डिफरेंट केसेस नहीं है, ठीक है? तो आपने बस सीज को इस तरह से दो ग्रुप्स में अलग अलग डाल देना है। अब क्योंकि वो मैटर नहीं करता कि कौन सा पहला ग्रुप है, कौन सा दूसरा ग्रुप है, कौन सा तीसरा ग्रुप है, नंबरिंग नहीं है कोई इसके अंदर, तो ये दो अलग ग्रुप में सीज को रखना सी वाले केसेस को ऑलरेडी हैंडल कर लेगा। अब दूसरा मसला क्या है, आपके पास ओज भी रिपीट हो रहे हैं, दैट्स अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव। ओ जो है ना, ये भी मल्टीपल आ रहे हैं, ओज के भी आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। अब ओज के केसेस क्या हो सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी फॉर इंस्टेंस हो सकती है कि दोनों ओज जो है वो एक सी के साथ आ जाए, राइट? दोनों ओज एक सी के साथ आ जाए, ठीक है? एक पॉसिबल केस ये बन गया, तो आपको एक सी और ओज के केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है? वो हम बना रहे हैं, सी और, क्योंकि वो दो रिपीटेड लेटर्स है ना, उनके केसेस बनाने पड़ेंगे। एक केस हमारे पास ये हो गया पहला, कि हमने सीज को अलग बॉक्सेस में रखा और दो ओज को एक सी वाले बॉक्स में डाल दिया। अब और केस क्या हो सकता है? रिमेंबर, हम ये नहीं कर सकते सी ओ ओ, क्योंकि ये दोनों सेम ही केस हो जाएंगे, अगेन बिकॉज ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये केस और ये केस इसमें सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि एक सी के साथ दो ओज है और एक के अंदर सिर्फ एक सी है। दीज आर नॉट डिफरेंट केसेस, दीज आर द सेम केसेस, ओके? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप एक ओ एक सी के साथ रख लें और दूसरा ओ दूसरे सी के साथ रख लें, दैट्स अनदर पॉसिबल केस यू कुड हैव, ठीक है? नाउ व्हाट एल्स कुड यू डू हियर? एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दो सीज तो हमने अलग अलग रखे, अब ओज को आप एक ओ एक सी के साथ रख लें, एक सी वाले बॉक्स में एक ओ को डाल दें और एक ओ को तीसरे अलग बॉक्स में डाल दें जिसमें कोई भी सी नहीं आ रहा। दैट कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी। ये आपके पास एक और केस बन गया। कुड देयर बी अनदर पॉसिबिलिटी फॉर प्लेसिंग ओ? एक ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लास्ट बॉक्स में दो ओज डाल दें कि वो किसी भी सी के साथ नहीं आ रहे हो, ये भी पॉसिबल है। So you could have one more case, and that would be कि ओज जो है वो किसी सी वाले बॉक्स में नहीं आते, वो एक आपने अलग ही बॉक्स में डाल दिया, जो तीसरा बॉक्स बच गया जिसमें कोई भी सी नहीं है, उसमें आपने दो ओज डाल दिए। These are the four different cases that you get from this. सीज को तो आपने अलग अलग बॉक्स में डाल दिया, वो तो कंडीशन हमने शुरू में डाल दी। अब ओज जो है या तो वो दोनों किसी एक सी वाले बॉक्स में आ जाए, या एक एक करके स्प्लिट हो जाए, या एक सी वाले में आ जाए और एक रिमेनिंग बॉक्स में आ जाए, या दोनों ही रिमेनिंग बॉक्स में आ जाए। दीज आर फोर केसेस दैट वी हैव। अब इन सारों के आपको देखना पड़ेगा कि क्या केसेस बनते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस में ये तो आपने बॉक्स ऑलरेडी फिल कर लिया हुआ है, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो सी ओ ओ आ गया ऑलरेडी। मेंबर अरेंजमेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें अरेंज कुछ भी नहीं करना। सेकेंड बॉक्स में देखें, यू हैव सम रिमेनिंग स्पेस, यहाँ पे आपने दो लेटर्स और प्लेस करने हैं। कितने बाकी रिमेनिंग लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। सी, नो सी तो हमने कर लिया हुआ प्लेस, आर डी आई एल ई, दीज आर द 5 रिमेनिंग लेटर्स। 5 में से कोई भी दो आपने यहाँ पे प्लेस करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? 5C2, राइट? और फिर 3 रह जाएंगे, तीनों को यहाँ पे आपने प्लेस कर देना है, that's just 3C3. That's going to give you the number of cases that you have for the first case. Okay? अब इसी तरह से आप सेकंड केस में देखें। सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक लेटर और है, और की जगह बाकी 5 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे पेश कर देंगे। दैट मीन्स 5C1, 5 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे इनपुट करना है। उसके बाद एक लेटर पर यहाँ पे प्लेस करना है। कितने रिमेनिंग लेटर्स हैं? 4 रह गए। 4 में से कोई भी एक आपने इसमें डाल दिया।
and then you have 3 remaining letters, वो last box में आ जाएंगे, that's going to be 3C3. But यहाँ पे एक और complication है. एक और complication क्या है? Let me explain that. So अगर आपके पास for instance ये आ रहा हो, इस बॉक्स में D आ जाए, अब देखें बाकी 5 लेटर्स इन बॉक्सेस में इस तरह से प्लेस कर रहे हैं ना, तो अगर इस बॉक्स में D आ जाए और इसमें लेट्स से R आ जाए और बाकी में ILE आ जाए, दिस इज वन पॉसिबल केस. तो ये क्या ग्रुप्स बनेंगे आपके? COD, COR एंड ILE, ये 3 ग्रुप्स बन गए. लेकिन अगर ये हो जाए, R इसमें आ जाए और D इसमें आ जाए और ILE इसमें आ जाए, ये क्या ग्रुप्स बन गए आपके? COR, COD एंड ILE. ये तो वही केस दोबारा से आ गया आपके पास. तो इसमें मसला क्या है? ये सेकंड केस में ना 2 ग्रुप्स इस पॉइंट पे आइडेंटिकल है, CO. तो इनमें कोई भी थर्ड लेटर आएगा ना, अगर वो R और D है लेट्स से, तो उसकी जो ऑपोजिट अरेंजमेंट होगी D और R, वो तो आपको सेम ही चीज दोबारा दे रही होगी. तो उसको आपने एलिमिनेट करना है बिकॉज वो डबल काउंटिंग हो रही है. तो इस पूरे को क्या करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से. ओके, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, या 2 से डिवाइड कर दे बिकॉज उसके 2 अरेंजमेंट्स है ना. तो 2 अरेंजमेंट्स हम किस तरह करते हैं? फैक्टोरियल से. तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया कि ये जो 2 केसेस आपके पास आ रहे होंगे यहाँ पे जो डबल काउंट हो रहे हैं, वो आपने एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, लेट्स लुक एट द थर्ड केस. देखिए फर्स्ट केस में प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज हमारे पास ये 2 आइडेंटिकल केसेस नहीं बन रहे थे, तीनों डिफरेंट बॉक्सेस बन रहे थे, तो उसमें वो मसला नहीं था. अच्छा, थर्ड में देखते हैं. You have 1 space remaining here, that's going to be 5C1. You have 2 spaces remaining here, that's 4C2. And then you have 2 spaces here, that's going to be 2C2. ये आपके पास कुछ आ जाएगा. फिर लास्ट केस देखें, you have 2 spaces here, that's 5C2. And then 2 spaces in the next one, that's going to give you 3C2. And then 1 space in the last one, that's 1C1. अब लास्ट वाले में भी वही मसला है. लास्ट वाले में क्यों वो मसला है? बिकॉज यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस ऐसे हैं विच आर आइडेंटिकल एट दिस पॉइंट. ये भी C है, इसमें सिर्फ C आ रहा है, इसमें भी सिर्फ C आ रहा है. तो अगर आपकी एक पॉसिबल अरेंजमेंट होती जिसमें हम पहले वाले बॉक्स के साथ R और D डाल देते और दूसरे वाले के साथ I और L डाल देते, तो अगर पहले वाले के इसमें IL डालें और दूसरे वाले में RD डालें, तो ये तो वही केस दोबारा से आ गया बिकॉज ग्रुप्स तो आपके वही बने फिर, राइट? ग्रुप्स तो आपके वही 3 बन जाएंगे. तो ये आपके पास दोबारा से फिर वो डबल काउंटिंग हो रही है. तो इस लास्ट केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? इस डबल काउंटिंग को एलिमिनेट करने के लिए यू वुड हैव टू डिवाइड इट बाय 2 फैक्टोरियल. इस पूरे को आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. ऑल राइट, आई होप दैट मेक्स सेंस. यू हैव दीज 4 केसेस. इनको अब ऐड करेंगे और आप देखेंगे आपके पास क्या आता है. फर्स्ट केस निकालें, 5C2 into 3C3, 5C2 is 10, या आपको 10 आ गया. सेकंड केस देखेंगे, 5 into 4, that's 20, 20 over 2 is 10 as well. सेकंड केस में भी 10 आ रहा है आपके पास. थर्ड केस, 5 into 6, 30, 30 into 1, that's 30, and the last one is 10, 3, 30, 30 over 2 is 15. Last case is giving us 15. And the result turns out to be 20 plus 30, which is 50. 50 plus 15, that is 65. 65 is the result that we get from this. Okay. Now, those of you who have any older marking scheme, if you try this later, उसमें उसने 80 रखा होगा. As I told you earlier, वो गलत है. उन्होंने बाद में अपडेट कर दिया था इसको, और वो 65 है. This answer is actually 65. Let's think about this. There are 6 men and 8 women in a book club. The committee of the club consists of 5 of its members. Mr. Lan and Mrs. Lan are members of the club. In how many different ways can the committee be selected if exactly one of Mr. Lan and Mrs. Lan must be on the committee? Okay, अब देखें, exactly one of them. That means या तो Mr. Lan होंगे या Mrs. Lan होंगी. इन दोनों में से एक हो सकते हैं टाइम के ऊपर. दोनों भी नहीं हो सकते और ये भी नहीं हो सकते दोनों ना हो. ओके, अब टोटल आपके पास कितने हैं? You have 14 people in total. 8 plus 6, that is 14.
उन 14 में से what they are saying is इन दोनों में से कोई एक बंदा जो है ना, मतलब एक बंदा या बंदी ये टीम में होंगे, उस कमेटी में होंगे और दूसरा नहीं होगा। नाउ लेट्स से हम कहते हैं मिस्टर लैन जो है वो कमेटी में है और मिसेस लैन जो है वो कमेटी में नहीं है। दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी, राइट? दिस इज वन पॉसिबल केस दैट वी हैव। मिस्टर लैन है और मिसेस लैन नहीं है। हाउ मेनी केसेस डू वी हैव फॉर दिस? अब देखें, इन दो के बारे में तो आपने डिसाइड कर लिया ना ऑलरेडी कि मिस्टर लैन को आपने सेलेक्ट करना है और मिसेस लैन को आपने सेलेक्ट नहीं करना। तो बाकी कितने लोग रह गए अब? रिमेंबर टोटल कितने हैं? 14 है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट वी हैव इज 14। इन दो के बारे में आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि मिस्टर लैन को होना चाहिए, दिस इज वन पॉसिबल केस, राइट, कि मिसेस लैन होना चाहिए, मिसेस लैन नहीं होनी चाहिए। ओके, बाकी कितने लोग बचे आपके पास? 12। आउट ऑफ दोस 12 रिमेनिंग पीपल, हाउ मेनी डू यू वांट टू सेलेक्ट? एक देखें आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया हुआ है। कितने सेलेक्ट करने थे आपको टोटल? आपको 5 सेलेक्ट करने हैं कमेटी के लिए, आपको 5 सेलेक्ट करने हैं। एक आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। हाउ मेनी मोर डू यू हैव टू सेलेक्ट? 4, so it's going to be 12C4. So in the case where you select Mr. Lan and do not select Mrs. Lan, the number of cases you have is 12C4. Let's evaluate this and see what that turns out to be. 12C4, this is giving me 495. Now there could be another possibility. And the other possibility is कि आप कहें कि अच्छा मिस्टर लैन को नहीं सेलेक्ट करता है और मिसेस लैन को सेलेक्ट कर लेता है। What about this case? Now it's exactly the same situation. आपने इन दोनों में से अब कहा है कि मिसेस लैन को सेलेक्ट करना है। How many people are you left with? जिनमें से आपने अब चूज करने हैं। 12 लोग रह गए हैं इसमें भी। उनमें से कितने और चूज करने हैं? 5 में से एक तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया मिसेस लैन। You have 4 more to select, so 12C4 इसके लिए भी हो जाएगा। That's also going to be 495. These are two possible cases. You could either have the first case or the second case. इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? Total number of cases कैसे आएंगे? We would just add these two up, and that's going to give us a result. 495 plus 495, that turns out to be 990, and that's our final answer. This is the number of ways in which this committee can be selected such that it satisfies the given conditions. All right. Let's look at part B now. It says, in how many different ways can the committee be selected if Mrs. Lan must be on the committee and there must be more women than men on the committee? Okay, now that's interesting. अब देखें आपके पास men और women है. How many men do we have in total? We have 6 men in total. And how many women do we have in total? We have 8 women in total. अब उसने क्या condition दिया? Mrs. Lan must be on the committee. So यानी कि Mrs. Lan का decision तो आपने ले लिया, उसमें तो कुछ आपके पास रह ही नहीं गया, right? So Mrs. Lan is already selected. तो अब बाकी 14 में से कितने लोग रह गए? 13 रह गए. She is already selected. तो उनको अब कुछ भी नहीं करना, right? So she's on the side now. How many women are we left with? We had 8 women in total. अब बाकी कितनी रह गई आपके पास? 7 रह गई। तो हम इस 8 की जगह पे क्या करते हैं? 7 कर लेते हैं। Okay. अच्छा, let me actually just keep it like this for now. इसको भी 8 रहने देते हैं, वरना फिर वो condition दूसरी आपको confusion हो जाएगी थोड़ी सी। More women than men करनी है ना, तो हम पहले वो cases बना लेते हैं, ठीक है? More women than men के कौन से cases बनते हैं? Let's actually write them down first. Total कितने select करने हैं? Total आपने select करने हैं 5. Okay, so women should be more than men. One possibility is that all of them are women, right? Because total 5 select करने हैं ना, तो आप सारी women select कर लो और कोई भी man तो नहीं select करो. That's one possibility. Another possibility is that you select 1 here and 4 here. Another would be that you select 2 men and 3 women. These are the 3 possible cases that you have. Okay. अब ये आप कैसे evaluate करेंगे? इनके number of cases आप कैसे evaluate करेंगे? That's where you have to be slightly careful ना. So we have men here and women here. I'm going to put them in different colors. Okay. अब देखें first case में देखें 6 में से आप कितने men select कर रहे हो? कोई भी नहीं. So that's a 6C0. Okay. अब second case में 8 में से आपने 5 women select करनी है, लेकिन
Remember, Mrs. Lan is already selected. Okay? तो फिर आपने चूज क्या करना है, बाकी जो 7 है उन 7 में से आपने 4 और चूज करना है. So it's going to be 7C4, not 8C5, it's going to be 7C4. Okay? अच्छा, उसके बाद the next possibility is 6 men में से आपने 1 man select करना है, so that's 6C1. And then out of 8 women, you have to select 4, but again, remember, Mrs. Lan is already selected. तो टोटल वुमेन बाकी कितनी बची, 7. बाकी 7 में से आपने कितनी और सेलेक्ट करनी है, 4 में से एक तो मिसेस लैन है, आपको 3 और सेलेक्ट करनी है, सो दैट्स 7C3. एंड देन इन द फाइनल केस वी हैव 6C2 फॉर मेन. 6 में से आपको 2 मेन सेलेक्ट करने हैं. एंड देन out of 8 women you want 3, but Mrs. Lan is already selected again. 7 women में से आपको बाकी 2 और चूज करने, so that's 7C2. ये तीनों केसेस आप इवैल्यूएट कर लें, देखें आपके पास क्या आता है. फर्स्ट केस देखते हैं, 7C4. Let's see what that turns out to be. 7C4. This is giving me 35. So this is 35. Then you have 6 into 7C3. That is 210. And then 6C2 into 7C2, that turns out to be 315. These are 3 possible cases that you have. You just add all of them up and see what that gives you. 35 plus 210 plus 315. And that is giving me 560. And that is your final answer. This is the number of ways that you have in this case, 560. Okay, I hope that makes sense. This is what we do in this part.